आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, मगर फिर एक स्टेज पे आप ये सोचते हैं कि यार कुछ तो मिसिंग है लाइफ से। अब क्या मिसिंग है? टाइम मिसिंग है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिसिंग है। हमारे पास यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर एमन, जो कुवैत से आई हैं और इन्होंने अभी मीर ग्रुप ज्वाइन किया है। हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये फैसला क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर एमन। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा कि आप पहले कुवैत में डॉक्टर थी, फिर आपने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, तो मैम अचानक से इस तरह करियर चेंज किया, तो आपने सोचा कि कोई प्रॉब्लम होगी, कोई हर्डल्स होंगे लाइफ में, किस तरह आप इसको केटर करेंगे? Well, it wasn't a sudden decision. I have been thinking about it since months, and obviously, it's a big decision changing your profession. I Right. was a doctor, and being a businesswoman is a totally different thing. Hmm. I did it because I wanted financial freedom. As I told you, I wanted luxury of time to give time to my kids and my husband. At the same time, my most humble wish was to spend Eid at home. I haven't been able to do that. Whenever there was Eid, I was just at home, at hospital. And at the same time, my husband is also a doctor. अब हम दोनों ही डॉक्टर हैं, ना बच्चों को टाइम दे रहे हैं, ना फैमिली को दे रहे हैं टाइम। तो ये चीज़ मेनली मैं चेंज करना चाह रही थी। तो मैम, आपका तो आपने डिसाइड कर लिया कि आप बिजनेस वुमेन अब बनेंगी, तो आपके डॉक्टर वही सेम प्रोफेशन स्टार्ट मतलब कंटिन्यू करेंगे दुबई में भी? Well, I have a degree. I have my experiences. Nobody can take it from me. Right. I am a doctor. I will remain doctor. So I have just resigned as a doctor, and I have come to Dubai to start a new venture. मैम, आपकी सर मीर से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? Well, I'm expecting a good collab with him in future, inshallah, and we'll see. इंशाल्लाह, यू हैव कम इन राइट डायरेक्शन मैम। तो इन्होंने सक्सेस की तरफ पहला कदम उठा लिया है विद मीर साहब। तो अगर आप भी अर्न करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमें कांटेक्ट कीजिए, हमारे नंबर्स पर रब्ता कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।